डीपीएस कल्याणपुर की बात करूं तो मेरे लिए ये एक वर्क प्लेस ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है। और जब मैं पलट कर देखती हूँ तो लगता है ये तो अभी कल की ही बात है। जब ईयर 2000 में मैंने डीपीएस कल्याणपुर ज्वाइन किया और देखते ही देखते कब 21 साल का समय पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। एंड टुडे, looking back at the journey of life, if someone asked me to count my achievements, it will not be the awards we received or the infrastructure we created. The true achievement has been to fulfill my vision for education. इस लंबी जर्नी में मेरे सामने था खुला आसमान, उड़ान भरने के लिए चुनौतियों की बुनियादी ज़मीन की हकीकत, समझने के लिए ना जाने क्या क्या, और इन सब के बीच मुझे कामयाबी और एक्सीलेंस की एक नई इबारत लिखनी थी। When I started as an educator, my dream was to create a difference, throw that one stone and let the ripples reach to the far end. With handful of children and a small size of staff, the focus was always on how to mold those young minds and mentor the little hearts, but with sensibility and constant hard work. मंजिलें मिलती गईं, कारवां बढ़ता गया, आसमान की बुलंदी छूने की फिक्र न थी हमें तो बस जिद थी आसमां को ज़मीन पे लाने की। In these 21 years, we earned the trust of parents, जिन्होंने अपनी अमानत हमें पूरे विश्वास से सौंपी और आज तक अपने भरोसे का सपोर्ट देकर हमारे साथ खड़े हैं। I am an ardent believer that children are like clay. If we mold them, we are not just shaping an individual, but the generations, and we did an exemplary task of shaping the future generations by our constant efforts of focusing on soft skills and developing the wholesome personalities. Time has flown with ease and without effort. How learning was accomplished, I never realized during this period. This task of shaping the future generations would not have been possible without the constant hard work and support of our team members. No school can develop without developing its teachers. Teachers जिनकी उड़ान को वो हौसला दिया कि हर टीचर बच्चों के व्यक्तित्व को तराशते हुए अपने भीतर छुपी हुई गुरु की चेतना का भी निखार कर सके। Each teacher got that place and space from where they could spread their wings and fly high. The environment where the foundations of learning were based on trust and faith has made this institute an epitome of success. And now I can very proudly say that this journey would not have been possible without the unceasing support, guidance and trust of Sir Amin. और हाँ, जिस तरह मैम अमीन ने अपने सपोर्ट से वर्क प्लेस में मुझे फैमिली का एहसास कराया, वो एक ऐसा अनकहा जज्बा है जिसका आभार व्यक्त करने के बिना सक्सेस की ये कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। I have always believed that if you follow your heart and go after your dreams, no matter what you do, you will end up making the most marvelous success. And these past 20 years have been the journey of living this dream each day. These lines by Robert Frost have always been driving my journey and taking me to the uncharted territory in the field of education. After all, the woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you so much.